ओके, तो हम थोड़ा रिपीट करेंगे ये सप्लाई क्या होती है. So we know that supply comes from the producers. Yes, And producers Yes, sir. supply, and that is bought and sold. That is bought and first comes the supply. Sold. First comes the production, then comes the supply. So producer is the supplier. Producer is the supplier. So how this supply acts in the market, how it works in the market. First of all, we must know meaning of supply. Supply is simply the quantity of a good, the quantity of a good offered for sale. Offered for sale in the market at a given price. At a given Yes, price. sir. एक given price पे कितना सप्लायर तैयार है बेचने के लिए, ऑफर्ड फॉर सेल, जो उसने ऑफर की है लोगों को कि मैं इतना तैयार हूं सेल करने के लिए, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लाई. और मैंने एक और एक डेफिनेशन राबिया को दे दी, इट इज द क्वांटिटी Yes, sir. which is willing and able to sell, which a producer is, Sir, at a given price. which a producer is willing and able to sell at a given price. At a given price. एक given price पे कितनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर तैयार है बेचने के लिए, willing and able to sell. जिस तरह हम डिमांड में पढ़ते हैं, it is desire backed by willing and ability to pay. Yes, sir. उसमें भी willingness and ability to pay है. Willingness to buy and ability to pay. Here it is willingness to sell and ability to sell. Willingness to sell and ability to sell. Yes, sir. So ये चीजें हमने उस दिन डिस्कस की है. It is the quantity of a good offered for sale in the market at a given price. At a given price. It is the quantity of a good which a producer is willing and able to sell at a given price. At a given price. Or actually offered, quantity actually offered for sale. और एक चीज हमने पढ़ी है, जो quantity supply होता है, that depends upon price. Depends upon price. Yes, sir. इस तरह quantity demand price पे depend करता है, इसी तरह supply भी depend करता है price पे. Market price क्या रह गया? अगर market price ज्यादा रहेगा तो supply क्या होगी? शाबाश, ज्यादा होगी सप्लाई. प्राइस राइजेस, अगर प्राइस राइज हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई डिमांड कम होगी और सप्लाई भी कम होगी. Yes, sir. अगर प्राइस कम होगा, इफ प्राइस फॉल्स एंड सप्लाई आल्सो फॉल्स, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई भी ज्यादा होगी. इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, Positive relationship है. सप्लाई और प्राइस में डिमांड और प्राइस में इनवर्स है, अपोजिट है, नेगेटिव है. Yes, sir. यहाँ पॉजिटिव है. हियर द रिलेशन इज पॉजिटिव or direct. The positive or direct. That means when one factor increases, another also increases. When independent variable increases, dependent variable also increases. Here we have direct or positive relation. That why there is direct and positive relation? Because when price rises, the profit expectation is also rise. The profit expectations of the sellers or producers also rise. Hence, they supply more and more. Generally, we see during the fruit season in Kashmir, when we observe that in the Sopore fruit mandi, whenever we know that in the fruit mandi, the price of fruit has gone up. Now the price of delicious has gone up. It is now selling at the rate of 1,000 per pack, or 1,500 or 1,200 or anything else. That is, people feel that prices have gone up, they supply more and more. Why they supply more and more? They want to achieve or earn more and more profit.
So price rise means more expectation, more profit expectation. Fall in price means less profit expectation. That is why. Yes, sir. Yes, That is sir. why sometimes we call that price rising trend in the economy is good for the economy. Yes, sir. Everyone wishes, as a consumers, we wish that prices should fall. अगर हम Yes, sir. as consumers act करते हैं तो हम चाहते हैं कि prices हमेशा कम रहे. Yes, sir. लेकिन for the sake of the economy, a better rise in price, a moderate rise in price is good for the economy. Why? Because profit expectations increase. जो profit Yes, sir. expectations वो increase हो जाती है, जिससे producers more and more produce करते हैं. Producers produce more and more. More. To produce more and more, they have to employ more and more resources in their factories, in their producing units. That means employment opportunities Yes, sir. rise. ये ऐसी chain, एक Yes, chain sir. बन जाती है, एक chain बन जाती है. ये बहुत समझने की बहुत अच्छी बात है. ये इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए, इकोनॉमिक स्टूडेंट को पता होना चाहिए why price rising trend is better for the economy. So as students Yes, of sir. economics, we must be in favor of the price rise. We must not be always negative thinkers about price rise. So whenever price rises, what the profit expectation is increase. Also rise. Profit is Yes, sir. increase. Profit is increase. When profit is increase, the production increase. The production increase. ये एक chain बन जाती है. Production increase. जब production increase हो जाती है, तो क्या होता है? Supply increase होता है. Resources ज्यादा employment होते हैं. Resources Yes, increase sir. करने पड़ते हैं. Resource increase means employment increase हो जाती है. Employment increase Yes, हो sir. जाती है. Employment increase means income increase. Income increase. People of income have increases. So when Yes, sir. income of the people increases, that means it is GDP growth. It is GDP growth. Yes, sir. Yes, sir. Increase of GDP. And income of all the people of an economy increase, it is GDP growth. It is GDP growth. So this is the supply side. Supply means the quantity offered for sale by a producer at a given price, or a quantity which a producer is willing and able to sell at a given price. The supply always depends upon price. It depends upon, there are also another factor which direct the supply, which manages the supply in the market. So main factor is it mainly depends upon the price. There is direct and positive relationship between price and quantity supply. Price and Supply. quantity supply. We have another concept which we have discussed with the Rabia, that is stock. That is stock. Yes, sir. Stock. Stock is the quantity Of a good जमा in the हुआ हो. market क्या and क्या access to supply. it is the excess of supply, the quantity access to supply, quantity Yes, sir. access to supply is stock. Is stock. क्वांटिटी जो सप्लाई के अलावा जो क्वांटिटी मार्केट में है, the quantity excess of supply in addition to supply, the quantity in addition to supply in the market is called stock. But basically Yes. stock is basically the stock is that part of that quantity which a seller can sell, which a seller can sell, or which a seller can supply, which a seller can sell or which a seller can supply if market conditions are favorable. If market conditions are favorable. Favorable. अगर market conditions ठीक रहे तो ये quantity supply हो सकती है. So it is that quantity which a producer can sell or willing to sell or he is able to sell, but in future at increased prices, at favorable prices, at profitable prices. So that is stock. Stock is excess of supply, the quantity excess of
supply, and we say supply is part of stock. Supply is part of Yes, stock, sir. but stock is not part of supply. Supply is part of. So stock में Yes, जो sir. quantity हम अलग निकालते हैं, ये हम तैयार हैं by sell करने के लिए, that is supply. That is supply. So supply is flow variable. ये question पूछा जाता है whether it is flow variable or stock variable. Stock means stock जो जमा है, जो change नहीं होता है, but supply is a flow variable. Change होता है, which changes over time. Which changes over Yes, sir. टाइम, जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, टाइम के साथ साथ ये चेंज होता है. अभी मेरे दुकान में फॉर एग्जांपल 10,000 बोरियां हैं. I have 10,000 bags Yes, sir. at 12 a.m. or 12 p.m. or 12 noon. At 1 p.m. I can have less or more. I can have not only 9,000. So at 2 p.m. Yes, sir. it can be 8, or at 5 p.m. it can be 20,000. So it changes over time. It changes over time. It changes over time. It is either increased, sometimes increased, or sometimes decreased. So Decreased. stock, supply is part of stock. Stock is that quantity which a seller can sell if market conditions are favorable. Favorable. Market conditions are favorable. Favorable. फिर हमने वो सप्लाई शेड्यूल भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना? सप्लाई शेड्यूल भी Yes, पढ़ा ना? अब समझ आ गया सप्लाई क्या होता है? yes, sir. आया. बाजमा सप्लाई शेड्यूल आ गया? Yes, सप्लाई sir, ये yes, sir. सप्लाई समझ आ गया ये क्या होता है? Yes, sir. सप्लाई वो क्वांटिटी है जो एक सेलर तैयार है सेल करने के लिए. Sale करने में. वो Yes, sir. ज्यादा सप्लाई करेगा अगर प्राइसेस ज्यादा हो, वो कम सेल करेगा अगर Yes, sir. प्राइसेस कम हो. कम हो. हम कह सकते हैं that quantity supply is function of price. Quantity supply is function of price. Right. That means when price increases, supply also increases. फिर हमने सप्लाई शेड्यूल भी पढ़ा है थोड़ा बहुत. सप्लाई शेड्यूल क्या पढ़ा था? हाँ जी सर ये एक चार्ट होगा जो हमें दिखाता होगा सप्लाई टेबल होगा. A table which shows, a table which टेबल आ रहा है चार्ट shows विच सप्लाई. different quantities of a good, different quantities of a good The producer is ready to sell. which shows different quantities of a good supplied or Yes, sir. offered for sale. Offered Yes, sir. for sale at different prices. At different prices. It is the Prices. table which shows different quantities of a good supplied or offered for sale at different prices. So the table which shows the quantity of a good offered for sale or supplied at different prices at different. It also shows direct relationship between price and direct or positive relationship between price and Supply and price. relationship between Price and supply. supply and price or price and supply. ये भी डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाती है. तो इसमें हम इंडिविजुअल इसके दो एक्सॉन है. वन इज इसकी एक क्लासिफिकेशन. एज पर क्लासिफिकेशन इट हैज टू टाइप्स, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है that table which shows different quantities supplied by a particular seller or individual seller to the market at different prices. तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक सेलर की सप्लाई का सप्लाई दिखाता है. एक सप्लाई की सप्लाई एक प्रोड्यूसर की सप्लाई दिखाता है. ये सारे मार्केट की सप्लाई दिखाता है. मार्केट सप्लाई शेड्यूल is that schedule or that table which shows
the total quantity supplied to the market at all by all producers or by all sellers, or by all producers. वो कंस्ट्रक्शन में किस तरह ये कंस्ट्रक्ट होती है ये सप्लाई शेड्यूल है? Yes, sir. सिंपली सप्लाई शेड्यूल किस तरह कंस्ट्रक्ट होती है ये हमें पता है. It shows relationship between price and quantity supply if other thing is remaining same. अगर बाकी चीजें जो हैं वो सेम रहेंगी, so this is price and quantity supply. Price and quantity supply. For example, price is, let it be 5, supply is 10, price is 10, supply is 15, price is 15, supply is 20, price is 20, supply is 25, 25 and 30. So this is a table which shows different quantities supplied at different prices. Different quantities supplied at different prices. One thing, another thing, it is a table which shows direct relationship between price and quantity supply. When price increase, supply also increase. Supply also increase. Yeah, this table can act also as individual supply schedule. So individual supply schedule is that schedule or that table which shows different quantities of a good supplied by a particular producer, or supplied by a particular seller at different prices, Clear? अब हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल है. अब ये बनाना आता है? फातिमा आपको समझ आता है ये? Yes. आसान सा चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है. तो मैंने वो वीडियो, आप मुझे ये फोन नंबर अभी देना है, मैं वही ऐड करूंगा, उस पे मैं वीडियो डालूंगा. है मार्केट सप्लाई शेड्यूल. मार्केट सप्लाई शेड्यूल. मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या चीज है? ये ऐसा टेबल, ये भी एक टेबल है, ये भी एक शेड्यूल है, बट इट शोज टोटल क्वांटिटी Yes, sir. supplied or offered for sale by all the producers, by all the sellers in the market at different prices. So market supply schedule shows total quantity, sum total of quantities supplied by all the producers, all the sellers to the market. So how it is constructed? Very simple. It also shows relationship between price and quantity supply. We know that, yes, we know that in the market there are so many producers or sellers who supply, who produce and supply to the market. Market में एक ही producer या seller नहीं होता है. Market means where there are number of sellers or producers. उसको हम market कहते हैं. So we have a good, for example, हम एक commodity की बात करते हैं, तो ये market में buy sell होती है, supply होती है. For example, its price is given in rupees and we have different sellers. For example, we have quantity supplied by seller A or producer A. एक दुकान वाला एक शॉपकीपर है, इस प्राइस पे कितना उसने सप्लाई किया. इसी तरह वहां दूसरा दुकानदार भी है, उसका नाम है B, वो कितना सप्लाई करता है. और एक दुकानदार है, उसका नाम है C, वो कितना सप्लाई करता है इस मार्केट प्राइस. और एक दुकानदार है, उसका नाम है D, वो कितना सप्लाई करता है. जब इन चार शॉपकीपर्स ने एक मार्केट बनाया है, तो इन चारों की सप्लाई को हम मार्केट सप्लाई कहते हैं. हम इनकी सप्लाई को मार्केट सप्लाई कहते हैं. सो ये टेबल जो बन गया है, इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. इट इज सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, we have a good, let it be, these are notebooks or it is pens or it is some fruit. Its price is, for example, 5 rupees. Its price is 5 rupees. 5 rupees. A, for example, supplies 10 units. B is a
I can say big shopkeeper or seller than A, he or she supplies 15 units. For example, this one supplies 5 units. This one supplies 20 units. So supply of A plus supply of B plus supply of C plus supply of D, it becomes the market supply. Yes, क्या बन sir. गया ये? 15, 25, 30, ये हो गया 50, 50. ठीक है? Up, for example, Yes, after sir. a few days or after a few hours or after a few weeks, the market, this market price has increased to 10. What will be the effect of supply to the market? All Increase होगा. increase होगा. All will increase their production and supply. हर एक अब ज्यादा तैयार करेगा और मार्केट को ज्यादा सप्लाई करेगा to earn more and more. For example, this person now increases supply. This also increases supply. This also increases supply, and this also increases. फातिमा समझ आता है? बंद रखा है. Yes, sir. 15. जब प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई हर एक की बढ़ जाती है. 20, 25, Yes, sir. 20 and 30. ये खुद लिखो. टोटल क्या हो गया? अगर और बढ़ गया 25, 30, 25, for example, this is 35. अगर और प्राइस बढ़ गया, 25 हो गया प्राइस, तो ये 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, हर एक बढ़ाएगा 30. Yes, sir. This is supply schedule. अब एक खुद प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी घर में. अगर ये टेबल एक है तो इकोनॉमिक्स में हर डायग्राम या हर टेबल के नीचे हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने ऊपर क्या किया. Yes, ऊपर sir. क्या किया. हम सिंपली लिखेंगे फ्रॉम द टेबल और फ्रॉम द अबव टेबल और फ्रॉम द अबव शेड्यूल. ये खुद कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस भी इससे आपको ठीक हो जाएगा. किस तरह इंग्लिश बनाना है, सेंटेंस किस तरह. फ्रॉम द अबव शेड्यूल or from the above table, when price was ₹5 for the good, the producer A or supplier A or shopkeeper A supplies 10 units. Producer B or seller B supplies 15. Seller C supplies 5. Seller D supplies 20. And sum total of A, B, C, D is 50, which is market supply. As when price rises to 10 rupees, the supply of A increases to 15, supply of B increases to 20, supply of C increases to 10, and supply of D increases to 25, and market supply is this much, which is total of A, B, C, D. Yes, we see sir. as price rises, the supply of all producers rise, and market supply also rise, which shows direct and positive relationship between price and quantity. Price and quantity supply. Price and quantity supply. So this is how this supply, this market supply works, or market supply schedule works. Yes, now sir. the next topic is our supply curve. Next is our supply curve. आज ही थोड़ा डिस्कस करेंगे. Yes, sir. आज ही थोड़ा डिस्कस करेंगे. Yes, sir. चलो हम उठाएंगे सप्लाई कर्व. व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई Individuals. उसके फिर दो वो टाइप्स है ना, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व. उतना ज्यादा मत आप देख लीजिए, आप सप्लाई कर्व ही कर दीजिए. व्हाट इज सप्लाई कर्व? वो फिर आसान है. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व दिखाता है एक आदमी की, एक प्रोड्यूसर की, एक सप्लायर की. तो जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो सप्लाई, इट शोज सप्लाई ऑफ ऑल सेलर्स, ऑल प्रोड्यूसर्स. तो पहले मार्केट सप्लाई समझ आनी चाहिए. व्हाट इज मार्केट सप्लाई? व्हाट इज मार्केट सप्लाई? Of supply schedule. Representation of supply schedule. Graphical representation. Graphical representation. Yes, graphical representation.
वो क्या होता है, जब हम सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब हम सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ पेपर पे बना देंगे तो हम जो कर्व बनती है, जो ग्राफ बनता है, उसको कहते हैं सप्लाई कर्व। दो व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। एक डेफिनेशन ये है, graphical representation of supply schedule is called supply curve। ठीक है, और when we plot the supply schedule on a graph paper, the curve we get is called a supply curve। उस कर्व को हम सप्लाई कर्व। Yes, sir. और what is this supply curve? ये होता क्या है? It is looks of points। It is looks of points, a combination of points, combination of points. Each point shows given quantity of a good supplied. Each point shows given quantity of a good supplied at a given price। ये लिखना साथ साथ, at a given price। Yes, sir. It is locus of points। Each point shows given quantity of a good, quantity of a good supplied or offered for sale at a given price। इसका एक पॉइंट दिखाता है कि कितनी क्वांटिटी मार्केट में सेल होती है एट गिवन प्राइस, एट गिवन प्राइस। और सिंपली वी कैन से the supply curve is that curve which shows अगर सारी सप्लाई कर्व की बात हम करें, which shows different quantities। अगर एक पॉइंट उठाएंगे वो गिवन क्वांटिटी दिखाता है, अगर सारे पॉइंट्स उठाएंगे, सारे पॉइंट्स कर्व को ही हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस वक्त वो दिखाती है डिफरेंट क्वांटिटीज सप्लाइड at different prices, at different prices। जनरली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल है, ये लुक्स ऑफ पॉइंट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है। वो उसका एक एक पॉइंट दिखाता है कितनी सप्लाई होती है मार्केट में एट ए गिवन प्राइस, और होल सप्लाई कर्व शोज डिफरेंट क्वांटिटीज सप्लाइड एट डिफरेंट prices at different। it also shows डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन, ये भी दिखाती है डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। बिकॉज व्हाई? बिकॉज सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज upward sloping curve है। So all upward sloping curves shows positive relationship between dependent and independent variable। It is upward sloping curve, or it slopes upwards from left to right। It is upward sloping curve। जो downward sloping होता है, negatively slope होता है, वो negative relation दिखाता है। जो upward sloping होता है वो positive relation दिखाता है। Now we can construct a supply curve from a supply schedule। अब तुम्हारे लिए काम है, मैं आपको काम दे दूंगा कि ये कर्व आप खुद बनाइए और खुद लिखिए उसको। For example, we have a supply schedule। We have a supply schedule। We can construct a supply curve from this supply schedule। हमारे पास supply schedule है। ये क्वेश्चन में भी आता है what is supply curve? Construct a supply curve from a supply schedule। तो supply schedule है हमारे पास, हमें supply curve, ये है quantity supply। This is price and this is quantity supply। Price and quantity supply। Yes। अगर मेरे पास for example price 2 है, तो quantity supply for example मुझे ये 5 है, 3 है, ये बढ़ गया ना है?
तो मैं थोड़ा ये भी बढ़ाऊंगा, 10, 4, इट इज 15, 5, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 20, अगर ये 6 बन गया 25, अगर ये 7 बन गया ये 30 है। तो क्वांटिटी सप्लाई को हम एक्स एक्सिस पे लगाते हैं और प्राइस को हम वाई एक्सिस पे लगाते हैं, है ना। ये आप खुद बनाइए घर में और इसके नीचे लिखिए भी, जिस तरह मैंने आपको बताया। ये है क्वांटिटी सप्लाई एंड दिस इज प्राइस। तो इसको आप डिवाइड कीजिए 5, 10, 15, ये हिंट है। इसको आप 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो आपको एक सप्लाई शेड्यूल बनेगी इस तरह, एसएस नाम रखना उसका। तो हर एक पॉइंट दिखाता है कितनी सप्लाई होती है किस प्राइस पे, कितनी। अगर ये पॉइंट में उठाऊंगा, फॉर एग्जांपल इट शोज दिस मच ऑफ सप्लाई एट दिस मच ऑफ प्राइस, this much is supply and this much is price. At this price we have this much of supply. जो horizontal line है वो supply दिखाती है, जो vertical line है वो price दिखाती है, प्राइस दिखाता है। नीचे लिखना आप from the above this diagram. When price is ₹2, the quantity supply is 5 and we get, for example, point A. When price rises to 3 and supply also rises to 10 and we get, for example, point B. When price again rises to 4, the supply increases to 15 and we get, for example, point C. We see as price rises, the supply also rises. Supply also rises. By joining these pointers, we get a curve which is called a supply curve, which is called a supply curve. It is an upward sloping curve, or it slopes upwards from left to right, which shows direct and positive relationship between price and quantity supply. This is all about the supply curve. फिर आप खुद बना सकते हो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड दिस मार्केट सप्लाई कर्व। जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है। जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई। वो मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो आपको मैं कल दिखाऊंगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट। वो थोड़ा मुश्किल है। इंडिविजुअल सप्लाई ये भी चलेगी, सप्लाई कर्व मींस इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो वो जो मार्केट सप्लाई होता है वो समेशन होता है। जो मार्केट सप्लाई वो सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो आई फील दिस इज एनफ। ये घर के लिए आपको काम है, बहुत साफ शफाफ बनाना, ये है कंस्ट्रक्ट करना, ये दिखना चाहिए अच्छा है, खूबसूरत। ओके, आज इतना ही। कल मैं आपको मार्केट सप्लाई वो करूँ सिखाऊंगा और हम फैक्टर्स उठाएंगे। क्या उठाएंगे? फैक्टर्स इफेक्टिंग द सप्लाई, फैक्टर्स इफेक्टिंग द सप्लाई। तो जो और भी वो बच्चियां हैं वो नहीं आती हैं, उनको फोन करना, उनको कांटेक्ट करना, नादिया को है, वो आएगी। और वो सुरैया थी और भी कुछ बहुत सी वो लेती थी क्लास। चलो शुक्रिया। ओके सर, खुदा हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज। अल्लाह।